So let's get started with today's subject, which is law of contracts. You can see it, and this is specifically for, like, it could work for DU LLB entrances also, but this is specifically for the semester classes as far as answer writing is concerned. Okay, so you might be knowing away after graduation that whenever you write an answer, there has to be a little bit of introduction, and then the body follows, and then you go for conclusion. तो ये जो body वाला part है उसमें हम case laws भी करेंगे. There is another video for that, you can check it out. All right, and then before I start, let's just take some time to click that bell. How is this bell drawn? Okay, so click this bell icon and make sure that you subscribe so that you get notified with all the relevant videos and relevant content for your semester examinations, entrances, and any other examinations that is related with law, that which is authentic and obviously, yeah, very very useful for you guys. So let's get started. Law of contracts is basically what? It is a very romantic discipline because it deals with promises. Now promises के कितने dimensions हो सकते हैं? तो the formation of promises, the performance of it, and the enforceability. So these are the three aspects promises के जिससे law of contracts जो है deal करता है. Right, now contract is derived from a Latin word. Like, even if you see those judicial examination papers, all right, so it is often asked that from what word, like tort is taken from Latin word or Greek word, tortum. What word is it? If you know it, do comment in the comment section. Wait, wherever it is for you guys, comment in the comment section below. Right, so here contract is taken from a Latin word which is contractus. Okay, now contractus is, like, it basically means to work on a contract, right? The legal maxim on which this discipline is based on is pacta sunt servanda. Now this means that agreements must be kept, or the pacts must be followed, right? कमिंग ऑन टू दिस मेजर, देखो एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है ये, बट इसने जो कहा है वो इंपॉर्टेंट है. सो द मोमेंट यू मेंशन इट एंड देन इफ यू हैव सम टाइम, you just mark it with black pen or something like this. This trick still works, that you just highlight the major points, because it's not possible for a professor to go through all those bundles of sheets. Okay, it's a very exhausting job. So if you just mark it out in a way that the particular section or the case law that you have written, it stands out, so yeah, it makes the job fairly easy for a professor, and by default you get those extra 1 or 2 marks, whatever, but then that makes a lot of difference. So coming back to Sir William Anson, he said that law of contracts is not a law. It is not a law that talks about rights and duties, कि आपके अधिकार क्या हैं और आपके दायित्व क्या हैं. ये इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है. ठीक है, दो लोग आए, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके क्या राइट्स होंगे, इसकी क्या लाइबिलिटी होगी. नो नो, देयर इज़ नो सच बुलशिट. ओके, इट इज़ अ कोड ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स. लाइक कि दो लोग आए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये किस एम्बिट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, व्हाट आर द प्रिंसिपल गाइडिंग दीज अग्रीमेंट्स. जो भी ये जो चीज़ है ना, जो इन्होंने अग्रीमेंट बिठाया अपना, उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि भैया आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो और ये कर सकते हो. सो इट इज़ बेसिकली अ कोड ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स, and not it does not describe or define rights and duties of the parties, right? Okay, it's a very free law. Obviously जहाँ प्रेम होगा, जहाँ promises होंगी, वहाँ freedom होना ज़रूरी है, otherwise the things go whatever. Like, let me know from your experiences in the comment below how the things go when there are promises but no freedom. However, in law of contracts we see that there is freedom. Now freedom implies, one thing is meeting of minds. This mom is meeting of minds, right? And mutuality, right? So this is again a very, these are the two factors. उसके बाद फिर फ्रीडम होना चाहिए. हालांकि फ्रीडम किस बात को कह रहा है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स और म्यूचुअलिटी है. ठीक है, तो फ्रीडम ये है कि आप कुछ भी करो.
क्योंकि लिमिटिंग प्रिंसिपल तो ऑलरेडी इसने दे रखे ना। अब इन प्रिंसिपल्स के बीच में, इसके एम्बिट में रह के आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी, ठीक है। अच्छा, इंडिया में जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो डील होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द्वारा, राइट। ये बेसिकली जो है उठाया गया, इट हैज़ बीन लिफ्टेड फ्रॉम, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ, okay, plus the judicial precedents that have come. Now what are precedents? Precedents are those cases that have already been decided and they are used as laws, right? मतलब उनको हम एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि आगे अगर इस तरह का पर्टिकुलर कोई केस आएगा तो हम उस पर यही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस फला 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 केस में यही प्रिंसिपल लागू हुआ था, राइट। अनटिल एंड अनलेस यू नो इट इज़ struck down, because law is a very dynamic field, amendments होते रहते हैं, situations change होती रहती है, and you come up with new things, right? Okay, do not forget to like, subscribe and comment, okay? And however, coming back to this, कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, ठीक है, 1872 का, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव माने कि भैया कॉन्ट्रैक्ट से जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हैं, बट इसमें से सिर्फ कुछ चीज़ें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हैं, ओके। नाउ राइट आफ्टर आई शूट दिस, आई एम गोइंग टू टेक an example from the Contract Act ka Bare Act, okay, just to tell you how to read a Bare Act, right? So make sure that you do definitely watch this video, because you are not going to get this lesson anywhere else, because the teacher that taught us is probably not anymore. So yeah, make sure you definitely watch that video. It will give you a very good overview of how to do a Bare Act, and the principles, the general things that I'm going to talk about in that video would be, you know, would be applicable to all the Bare Acts you'll ever read or you'll ever come across in your life, right? However, हाँ, तो एग्जॉस्टिव का जो मतलब होता है ना कि भैया देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी सोगा में भी, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी मिलता है कि भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कैसे करवाई जाए। फिर आपका आ गया और क्या क्या चीज़ें हैं, जितने भी कमर्शियल लॉज हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लौता ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस हो। Just an example, again a comparative example, like for any crime or offense that will ever occur in the territory of India, we have एक मेजर चीज़ IPC। अब IPC के हिसाब से भैया एक टाइम तक सिर्फ IPC ही था, उसके बाद भाई फूड एडल्ट्रेशन होने लगे, ये होने लगा, वो होने लगा, शहर में लोग बढ़ गए हैं, तो फिर उसके हिसाब से और भी NDPS ये सब आती हैं। तो ऑफेंसेस को क्लासिफिकेशन के हिसाब से इट इज़ अभी के टाइम में इवन दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। व्हाट एग्जाम्पल कैन वी टेक? ओके, से फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट इज एग्जॉस्टिव एज फार एज हिंदू मैरिज इज कंसर्न्ड। अब मैरिज होगा, मैरिज कैसे होगा, मैरिज वैलिड होगा कि नहीं, मैरिज कब वॉइड होगा, मैरिज की कंडीशंस क्या होंगी, सेरेमनीज क्या होंगी, मैरिज के बाद डिवोर्स होगा, मेंटेनेंस होगा, ये सारी चीज़ें इट इज़ देयर इन हिंदू मैरिज एक्ट, एंड दिस इज़ एन एग्जॉस्टिव कोड right now, and it will always be, because for adoption and other things we have other acts, for marriage we just have this one, right? So this is what does, I hope this word is very very clear, okay? अब ये जो ज्ञान है वो फालतू का नहीं है। What you can do is, while if you know, if there is a little essay on it or like a short note, you can actually use those examples to explain this if time allows, and if your writing speed is एक number, right? Coming on to some case laws. Now, how do you insert case laws in your what do we call, in your answer, right? So now this is a Satyabrata Ghosh case. ये जो केस है ना, यहाँ जब हम एग्जॉस्टिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ बिल्कुल एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एग्जॉस्टिव टू एन एक्सटेंट, also exhaustive to an extent that whenever it comes to, you know, Indian contracts, okay, the contracts that are being executed, formed and enforced, like formed, performed and enforced in the territory of India, we will always refer to Indian Contract Act. और ये जो जहाँ से ये चीज़ डिराइव हुई है ना, इंग्लिश कॉमन लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि भैया हम यहाँ से उठा के ऑलरेडी ये बना चुके हैं जो इंडियन कंडीशंस को सूटेबल रहे,
ठीक है, तो अब हम फालतू में दोबारा इंग्लिश कॉमन लॉ के पास नहीं जाएंगे. सो इन अ वे इट इज़ एग्जॉस्टिव इन नेचर. दैट इज़ वॉट हैज़ बीन हेल्ड इन सत्यव्रत घोष केस वर्सेज. ये बहुत ही गिरधारी विरधारी है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन जस्ट मेंशन दिस and write that what has been held, like what it says. The important message is that we don't need to lift the laws from English common law, as we already have this, filtered form. And in that way, in that manner, उस सेंस में, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो जो ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो एग्जॉस्टिव है. ठीक है. भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, अगेन अ केस लॉ विच सेज कि जब तक आवश्यकता ना हो तब तक, ठीक है, कहीं से हमें कहीं और जगह से, बेसिकली कहीं और जगह रेफर्स ऑलवेज टू इंग्लिश कॉमन लॉ और द सोर्स फ्रॉम वेयर द स्टैच्यूट हैज़ बीन लिफ्टेड. ओके, तो जब तक आवश्यकता ना हो तब तक हम नहीं उठाएंगे कोई भी प्रिंसिपल. ठीक है. हालांकि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इशू आता है, कोई ऐसा केस आता है, क्योंकि you never know with society anything can happen. So if a situation comes where there is no law itself as far as Indian Contract Act is concerned, मतलब Indian Contract Act में वो situation ही नहीं डिस्कस की गई है, तब फिर भैया हमारे पास कोई चारा नहीं बनता है सिवाय यहाँ पे आने का. अदरवाइज we will stick to our dear ICA 1872. Okay, coming on to schedule, right? एक schedule, एक before you lift the bare act, you always should flip the first few pages, okay, of the index and check out ki how is it divided, under what heads, under what chapters, and what are the things it deals with. You should always look into it. And when you do this, तो जो उसका आप नाम देंगे वो होगा schedule. I know it's very basic, I know you must have learned it, but it's for those who are also preparing, but yeah, primarily for semester. So okay. सो शेड्यूल इसका ये है कि इसमें कुल मिला के 10 चैप्टर हैं. ठीक है. और 238 टोटल सेक्शंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करते हैं और उनसे डील करते हैं. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, I really want to announce that we'll be soon launching a membership, community where you can join us, okay, for semester classes if you want, for any particular subject or like any topic that you want to take, and what else, on a very minimal rate if you want. Okay. And if you are interested, let me know your responses in the email. You can mail it to us. All those who are very, very excited for studying for the semester thing before your classes start and you already want to stay prepared, okay, because law is a tough mistress. So join बटन आप ही के लिए आ रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा.